Hello children, welcome back to my talks, and here I am there with standard 10th biology, one of the last topics, okay, the 10% law from environment. Okay, we did the energy transfer, okay, but I hope this particular topic was left, so I'm doing it today. Now 10% law children, actually what we have done is we did what are actually when we do environment or when we talk about how the energy transfer takes place, we talked about producers, okay, consumers, the different strata, okay, consumers and decomposers. Got it? Okay, and here we have the sun. So from sun it comes here, from producers to consumers and consumers to decomposers. Okay, that is what is said. Now energy transfer, when we said the whole of the environment, we all are dependent upon the plants for energy, okay, and what for the energy is required in order to carry out different metabolic functions which keeps on taking place in our bodies, human beings, animals, even the unicellular organisms, all. Okay, and it is the prokaryotes and all the green plants, you can say, which provide energy to all the other living organisms on this earth, isn't it? So they come under producers, those which produce food for the whole world. And after that consumers, again it may come primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. I hope till now it must be very very clear. Herbivores, carnivores, omnivores, okay, we can place like that. And then it comes to decomposers, that after death the microorganisms have to decompose, and whatever has the composition of our body, everything has to be returned back to the soil. Okay, so what does this 10% law says? Okay, that from the sun, whatever the sunlight itself is utilized for carrying out photosynthesis process. Okay, for photosynthesis it is carbon dioxide is a main constituent, you can say, okay, plus without sunlight the photosynthesis cannot take place. So whatever sun rays that is trapped by the plants, the chloroplast traps the sunlight, okay. So what happens, only 10% of that sun rays, the sunlight, okay, the energy, the solar energy is absorbed by the plants, and rest all gets dissipated, gets spread into the environment. Got it children? 100 अगर हम सोचें तो केवल 10 plants utilize करता है in the process of photosynthesis. Rest 90% is completely dissipated into the environment, completely wasted, you can say, it goes into the environment. So only 10%. So that 10% it utilizes for carrying out photosynthesis and for producing the products on which all the living organisms are dependent. तो ये 10% फिर producers ने यूटिलाइज किया, और अब इस 10% का क्या होगा, 10% का 90% वो खुद के लिए यूज करेगा और केवल 10% कंज्यूमर्स को जाएगा. ओके, 10% का ये सपोज 1 हो गया, यहाँ पे 10% हो गया, 100 का 10 प्रोड्यूसर्स को मिला. ओके, उसके बाद इसने अपने को 90 यूज किया और यहाँ पे 10 दे दिया प्राइमरी कंज्यूमर्स को. उसके बाद 10% ऑफ 10, so 10 by 100 into 10. So what will happen children? This comes to 1. तो सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सपोज गेट्स 1, ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर को हमको 1 मिलेगा, और टर्शरी कंज्यूमर तक जाते जाते केवल 10% ही नीचे जाएगा. तो 1 का 10% मतलब 1 by 100 into 10. So 10% of 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर 1 by 10, that is 0.01%. तो 0.01%. तो जितना जितना हम लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स में नीचे जाएंगे उतना कम एनर्जी हमको मिलेगा. होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. अगर हम सन रेज जो यहाँ पे आता है, ओके, केवल 10%, अगर 100 सन हमको, अगर सन के पास 100 है तो प्लांट्स तक आते आते प्लांट्स के पास केवल 10 बचता है. गॉट इट? नाउ आई एम रबिंग, ये जो हमने पहले किया है उसको हम रब कर रहे हैं, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो प्लांट्स को केवल 10 मिलता है. अब इसका 10 वो क्या करेगा, 90% ऑफ दिस हीट प्लांट्स विल यूटिलाइज फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक फंक्शन. तो अब 10% ऑफ 10, ओके, वही जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास. तो 10% ऑफ 10 इज ये प्लांट्स का जो 10 है उसका 10% ही केवल प्राइमरी कंज्यूमर को जाएगा. तो दिस, सो इट कम्स टू
1. So 1 will go to primary consumer. A primary consumer इसका 90%, 1 का 90% it will utilize and it will send only 10% to tertiary consumer. तो फिर 10% of 1. Got it? So क्या हो जाएगा? 1 by 10. And 1 by 10 का 1 divided by 10 that is 0.1. और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे 0.1, 0.01, 0.001 एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा. सो व्हाट डू वी कंक्लूड चिल्ड्रन? दैट हम ट्रॉफिक लेवल में जितना ऊपर रहे उतना ज्यादा अच्छा है. हम प्रोड्यूसर्स को अगर प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हम पालक, हम वेजिटेरियन हैं, हमने पालक खा लिया, हमने लीफ को वैसे हमने फ्रूट्स खा लिए, तो वो डायरेक्ट है, हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं. ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में सबसे मैक्सिमम एनर्जी हमको वहां मिलता है. हम सेकेंडरी कंज्यूमर में जाते हैं तो हमारे डेसिमल्स में एनर्जी मिलने लग जाता है, क्योंकि हम प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. और प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? प्रोड्यूसर के ऊपर. तो हम जितना लेवल धीरे धीरे नीचे जाएंगे एनर्जी उतना उतना कम होता जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू clear off in this. Hope it's very clear, children. Go through the text also, and this is what, just keep it in your mind, the 10% law of energy transfer. Hope it's very clear. Okay, so again keep watching my English videos, bio videos, motivational. I've also started with my English speaking videos, so go and watch that. And not subscribed, do subscribe. Now I've been telling you since quite long, and if you have not done, you'll be at loss. Okay, because you will not get the videos to see, and do share it and like it. Thank you for